ट्वेल्थ स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स महाराष्ट्र बोर्ड। तो हम लोग देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। तो इसमें दो सेमिस्टर्स रहते हैं। तो फर्स्ट सेमिस्टर में देखते हैं कौन कौन से चैप्टर्स है। तो फर्स्ट सेमिस्टर में 7 चैप्टर्स है। मैथमेटिकल लॉजिक, उसके बाद मैट्रिसेस, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, वेक्टर्स, लाइन एंड प्लेन एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। तो डिटेल में देखते हैं कि इनमें कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे। मैथमेटिकल लॉजिक में है आइडेंटिफाई स्टेटमेंट इन द लॉजिक एंड ट्रूथ वैल्यू ऑफ इट, कंबाइन टू और मोर स्टेटमेंट्स, कंस्ट्रक्ट truth table and examine logical equivalence of statement patterns, find dual and negation of statement pattern, study the applications of logic to switching circuits. Then matrices may identify order and types of matrices, perform basic algebraic operations on matrices, find the inverse of matrix using elementary transformation and adjoint method, solve the system of linear equations using matrices. उसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है। इसमें understand and write trigonometric equation, find the principal and general solution of a trigonometric equation, solve triangle by using single rule, cosine rule and projection rule, and find area of a triangle, understand inverse trigonometric functions with the domain and range. Then pair of straight lines is may write and interpret the combined equation of two straight lines in a plane, find the point of intersection of two lines and calculate the acute angle between them, study the general second degree equation in x and y with reference to homogeneous part of it. Then vectors we understand the scalar vectors and understand scalars and vectors and algebra of vectors, write vectors of 2 or 3 dimensions, understand the scalar and vector products, study applications of vectors to area of triangle, interpret scalar triple product and its applications, direction ratios and direction cosines of a vector. उसके बाद line and plane, find different forms of equation of line, find angle between two intersecting planes, find the angle between line and plane, find condition for perpendicularity and parallelness of planes, calculate distance of a point from a plane, find equation of a plane in different forms, find angle between two intersecting planes, find the angle between a line and a plane. उसके बाद linear programming problem, understand linear equations in 1 and 2 variables, find graphical solution of a linear inequation, understand meaning and formulation of LPP, find solution of LPP by graphical methods. तो ये सेमिस्टर 1 में है। देखते हैं अभी सेमिस्टर 2 मैथ्स में क्या स्टडी करना पड़ता है। तो मैथ्स सेमिस्टर 2 है, इसमें 8 चैप्टर्स है। First one is differentiation, then application of derivatives, definite integration, application of definite integration, differential equations, probability distributions, उसके बाद बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिटेल में देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हम पढ़ते हैं इसमें। तो डिफरेंशिएशन में स्टेट एंड यूज स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज ऑफ डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस, यूज चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव्स, फाइंड डेरिवेटिव्स ऑफ द लॉगरिथम्स, implicit inverse and parametric functions, find second and higher order derivatives, find equations of tangents normal to the curve, standard nature of the function increasing or decreasing, find approximate values of the function, examine function for maximum minimum values, verify mean value theorem. उसके बाद indefinite integration, इसमें understand the relation between derivative and integral, use the method of substitution, solve integral with the help of integration by parts, solve the integrals by the method of partial fractions. उसके बाद definite integration, understand integral as a limit of sum, the properties of definite integral, state the properties of definite integral and use them to solve the problems. उसके बाद application of definite integration में find the area under the curve bounded by the curves using definite integrals. Then differential equation, form a differential equation and find its order and degree, solve the first order and first degree differential equation by various methods, apply the differential equation to study the population growth and decay in amount of substance and physics. उसके बाद probability distribution, understand the random variable and its types, find the probability mass function and its probability and distribution, find the expected value, variance and standard deviation, find the probability density function of a continuous random variable, find distribution function of CRV. उसके बाद लास्ट वाला बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें अंडरस्टैंड रैंडम एक्सपेरिमेंट विद 2 or more आउटकम्स, डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट विद पैरामीटर्स n and p, find mean variance, expected value and the standard deviation for binomial distribution.
तो ये सब चैप्टर्स पढ़ने पड़ते हैं मैथ्स 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड में। तो इसके ऊपर मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ और कोचिंग क्लासेस भी लेने वाला हूँ। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।